So first question is, you can tell me the answer, is it true or false, and the reason also. First question is, if a number is in integer, then the number is also rational. Like if the number is integer, it is also rational. So what do you say? If a number is integer, is it also rational? Yes, ma'am. Is it true? Yes. Abdul Mohit, what do you say, bete? Yes, Abdul ma'am. is saying it is true. Is it? It's true, right? So an integer is also a rational number. Okay? So that is true. So, but what about the other way around? If it is a rational number, will it also be an integer? Like we know all the integers are rational number. So what do you think? All the rational numbers are integers? If all the integers are rational numbers, so do you think all the rational numbers are integers? Please answer this question, Abresh and Abdul Mohit. Do you think all the rational numbers are integers? Yes or no? But can you hear my voice? Because I cannot hear your Yes, voice. ma'am. So what about Abresh? So Bete, what do you think? If an integer is rational number, all the integers are rational. So do you think rational numbers are also, all rational numbers are also integers? No, ma'am. So do you want me to explain or do you have any idea? No, ma'am. All the integers are not rational. नहीं, all the integers are rational because this is rational number ना. अगर ये rational numbers का set है, like these are all rational numbers inside this circle, so then you know integer is inside. ये integers है. ठीक है? So all the integers, as you can see, इस circle में जो integers का circle है, this is inside rational numbers. So all integers are rational. ठीक है? So if it is Okay, minus ma'am. 4, let's say 8, let's say minus 13, ये integers हैं. तो ये rational भी हैं. ठीक है? Because rational numbers हैं ये, हाँ, सिर्फ irrational वो numbers हैं जो non recurring हैं या फिर जो unsolvable roots हैं. तो ये तो इनमें तो ऐसा कोई problem नहीं है. So they are all rational. So all integers are rational. So my question was कि all rational numbers are also integers. So that is a no. Why? Because rational numbers में आपके पास decimals में आते हैं. For example, मैं लिखूँ 3.5. अब 3.5 is a rational number, Ma'am, down but this one is is not integer. false. ठीक है? Similarly, 2 by 5. अब 2 by 5 is a fraction. 2 by 5 is rational because ये terminating decimal है, लेकिन it is not integer. Are you getting the point? So we can say all integers are rational, but all rational numbers are not integers. ठीक है? So next question is, if a number is real, then it is also rational. If a number is real, then it is also rational. What do you say? If a number is real, it is also rational. Do you think so? It is always true? A real Ma'am, number it could be is always irrational as rational. well. So it is false. It could be irrational as well. That's right. Yes, It ma'am. can be irrational also, right? So it's not necessary that all the real numbers are rational. Okay? So it's a false statement because real numbers can either be rational or it can be irrational, right? So next is 3.456 is an irrational number. So Abdul Mohit, I want you to answer. Do you think it's an irrational number? What kind of decimal is this? Ma'am, this is a irrational. Why it is irrational? Ma'am, it is not 3.45. irrational. It is not irrational. So this is Because false. ma'am, Why? because it has not dot signs after it. Why? Because our system is divided into, I hope you can see the whiteboard, Mohit. Real number system, like real numbers. ठीक है? Maths में ना mathematicians ने सारे numbers को groups में divide कर दिया based on their properties. ठीक है? So real number system या real numbers are of two types. One is rational, other is irrational. ठीक है? So हम अभी मैथ्स में जितने भी नंबर्स देखते हैं ना, वो या रैशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं. अगर एक नंबर इरेशनल है तो वो फिर रैशनल नहीं हो सकता. ठीक है? These are two isolated groups. They are not overlapping. ठीक है? अगर एक नंबर रैशनल नंबर है तो वो फिर इरेशनल नहीं होगा. ठीक है? सो ये आपने याद रखनी है एक चीज. अब रैशनल नंबर्स किस किस तरह के होते हैं? देखो, वी विल स्टार्ट विद द बेसिक. रैशनल नंबर्स का सबसे छोटा ग्रुप है नेचुरल नंबर्स. ठीक है? सो सबसे पहले Yes. नेचुरल नंबर्स आए. ठीक है? द काउंटिंग. ठीक है मोहित? सो देन कम होल नंबर्स. होल नंबर्स में हमारे पास क्या आ गया? जीरो आ गया. इसका मतलब जीरो इज आल्सो रैशनल. ठीक है? देन वी हैव इंटीजर्स. ठीक है? सो इंटीजर्स में we have zero and positive and negative numbers. So positive numbers तो पहले ही थे natural numbers में, negative numbers आ गए. So इसका मतलब है कि integers are also rational. ठीक है? All integers are rational.
ठीक है। अब रैशनल में फर्दर क्या इंक्रीज हुआ, व्हाट मेक्स इंटीजर्स डिफरेंट फ्रॉम रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स में ये सारे तो ऑलरेडी आ गए, नेचुरल भी आ गए, होल नंबर्स भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए। अब रैशनल में दे हैव एडेड फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ठीक है, फ्रैक्शंस आ गई और लास्ट में मैं लिख रही हूँ डेसिमल्स आ गए। अब हमने 6 क्लास में आके पढ़ा कि जो डेसिमल्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं। ठीक है, डेसिमल एक टाइप के नहीं, मैम डेफिनेटली फिर रैकनिंग, फ्रैक्शंस भी 3 टाइप। दैट्स राइट। सो सबसे पहले कौन से टर्मिनेट, डेसिमल्स आते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। फिर आते हैं रैकरिंग डेसिमल्स और फिर आते हैं नॉन रैकरिंग। मोहित टर्मिनेटिंग, इनकी, दैट्स राइट। टर्मिनेटिंग कौन से डेसिमल्स होते हैं? जहां पे आपकी डिवीजन खत्म हो जाती है, 0.265 डिवीजन खत्म हो गई है, इसका मतलब है दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, 0.75 दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल बिकॉज डिवीजन एंड हो गई। अच्छा, अब रैकरिंग डेसिमल्स कौन से डेसिमल्स होते हैं? जिनमें आपकी डिवीजन खत्म नहीं होती और द सेम नंबर कीप्स ऑन रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल 0.3 विद अ मैम बार। 0.3333। ठीक है, अच्छा इसको एक यस तरह यूं लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.333 एंड देन यू कैन जस्ट ऐड 3 डॉट्स। दीज 3 डॉट्स आर शोइंग दैट द नंबर्स कीप ऑन कमिंग, इसकी डिवीजन खत्म नहीं हो रही। ठीक है, इधर पुट अ बार ऑन द टॉप और यूज दिस वन। ठीक है, अच्छा नाउ फॉर एग्जांपल देयर आर सम डेसिमल्स जिनमें थोड़े टाइम के बाद डिवीजन रेपिटेशन आती है, यानी 0.816 विद द बार। अब इस डेसिमल में क्या हो रहा है, 8 1 नॉर्मली आ रहे हैं और 6 के बाद अब रेपिटेशन स्टार्ट हो गई है, सो दिस विल आल्सो बी कंसीडर्ड अ रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर रेपिटेशन थोड़े टाइम के बाद भी शुरू हो ना, तो अब इस डेसिमल में बार बार 6 आ रहा है, तो दिस इज कंसीडर्ड अ रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं? व्हेन द डिवीजन इज नॉट फिनिशिंग and there is no pattern, for example 1 4 5 9 6 3 2 9 8 and so on। मैम जी जी, 0.31231231 पे शायद सेम पैटर्न रिपीटिंग। पैटर्न इज रिपीट, दैट इज आल्सो रैकरिंग। रैकरिंग डेसिमल में आप पैटर्न कैन रिपीट। ठीक है, अच्छा अब ये बड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज वी डोंट हैव कैलकुलेटर्स। तो बाज औकात कई फ्रैक्शंस में आपने ये पढ़ा हो शायद कि बहुत ज्यादा टाइम के बाद रेपिटेशन स्टार्ट हो जाती है, जैसे 5 डिजिट के बाद रेपिटेशन आती है। तो आपने हमेशा याद रखना है जब आप रैकरिंग डेसिमल चेक करते हैं, यू नीड टू कीप इन माइंड 2 थिंग्स। एक तो आपने हमेशा अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस पे एटलीस्ट, इससे कम नहीं करना, 5 डेसिमल प्लेस पे डिवाइड करना है। सेकेंडली आपने कुछ स्पेशल डिवाइजर्स को याद रखना है। ठीक है, कुछ नंबर्स है ना जो अगर डिवीजन में आ जाए तो आपका हमेशा रेकरिंग डेसिमल आता है। जैसे फॉर एग्जांपल 7 आ जाए, अगर किसी भी नंबर जैसे 4/7 है, ठीक है, लेट्स से 3/7 है, ठीक है, कोई भी 7 के साथ डिवाइजर आ जाए, दैट इज अ रेकरिंग डेसिमल, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डिवाइडिंग। आल्सो 11, आल्सो 12, 12 इज आल्सो अ स्पेशल डिवाइजर। ये वो डिवाइजर्स हैं जिनका आंसर हमेशा रेकरिंग डेसिमल में आता है या मोस्टली रेकरिंग डेसिमल में आता है, तो इनको जब डिवाइड करते हैं ना, तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, अब ये नॉन रेकरिंग डेसिमल्स हैं जिनमें डिवीजन कभी खत्म नहीं। अब ये जो वैल्यू मैंने लिखी है ना एस्टिमेटेड, ये वैल्यू पाए की है। ठीक है, पाए लिखे या ये वैल्यू लिखे, दिस इज द सेम मीनिंग। ठीक है, सो नॉन रैकरिंग और रैकरिंग में दीज 3 डॉट्स विल बी यूज्ड, और रैकरिंग में हम ये बार यूज करते हैं टू शो द पैटर्न। अच्छा, अब डेसिमल्स में आई टोल्ड यू द अदर डे, टर्मिनेटिंग और रैकरिंग आर रैशनल नंबर। अगर एक डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल है या रैकरिंग डेसिमल है, तो दैट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, लेकिन अगर और वो नॉन रैकरिंग है तो फिर वो क्या हो जाता है? नॉन रैकिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और इरेशनल। इरेशनल। ठीक है, तो ये इरेशनल होते हैं। और एक और इरेशनल सिर्फ 2 ग्रुप्स हैं, एक नॉन रैकरिंग डेसिमल। मोहित, आर यू लिसनिंग टू मी बेटे? इरेशनल नंबर्स सिर्फ 2 तरह के हैं। यस मैम। एक नॉन रैकरिंग डेसिमल्स इरेशनल है, ठीक है, और दूसरा अनसॉल्वेबल अनसॉल्वेबल, रूट्स। अनसॉल्वेबल रूट्स। ठीक है, जो रूट्स परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब्स नहीं होते वो इरेशनल है। अब देखो, अगर मैं कहूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो वो रैशनल है बिकॉज उसका आंसर 1 है। अगर मैं कहूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो बिकॉज ये अनसॉल्वेबल है, इसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसका मतलब है ये इरेशनल है। एक्चुअली मैथमेटिशियंस ने जो सबसे पहला इरेशनल नंबर इन्वेंट किया था ना, वो भी ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 था। स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाज द फर्स्ट इरेशनल नंबर डिस्कवर्ड बाय मैथमेटिशियंस, और ये इतनी पुरानी बात है कि इट हैपेंड इन, आई डोंट नो, आपने हिस्ट्री में पढ़ा है ना, इन टाइम ऑफ रोमन्स आई बिलीव। ठीक है, सो इफ आई एम नॉट, सॉरी, जी बेटा, सॉरी, I think so. I don't remember it exactly, but yes, a Muslim mathematician. So basically, मुझे अब इसकी हिस्ट्री ज़हन में नहीं है, लेकिन एक्चुअली उसके जो लाइक जो स्कॉलर्स थे ना, विच वर वर्किंग, लाइक उनके स्टूडेंट्स जो थे, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था, बट दे वर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। तो उन्होंने इन्वेंशन के कुछ अर्सा तक इसको छुपाया, मतलब इतनी बात क्लियर नहीं हुई, उसके बाद इसको फाइनलाइज किया गया। ठीक है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाज द फर्स्ट रैशनल इरेशनल नंबर। अच्छा, आप देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज रैशनल बिकॉज इसका आंसर 2 है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज अगेन इरेशनल, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज अगेन इरेशनल, स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज अगेन। अब ये अगर आप नोटिस करें तो अनसॉल्वेबल रूट्स सॉल्वेबल रूट्स से ज्यादा हैं। कल हमने देखा था ना कि फर्स्ट 100 नंबर्स में सिर्फ 10 सॉल्वेबल रूट्स स्क्वायर रूट्स हैं, और बाकी 90 क्या होंगे? इरेशनल। समझ आ रही है बात की? अब स्क्वायर रूट ऑफ 81 तो रैशनल है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 82 इज इरेशनल, स्क्वायर रूट ऑफ 83 इज इरेशनल। जी, जी मोहित, नॉन रैकिंग एग्जांपल।
नॉन रैकरिंग की कोई भी ऐसी एग्जांपल, जैसे ये पाई की वैल्यू है, ठीक है, इसके अलावा कोई भी आप एग्जांपल अगर आपको कोई लिखनी पड़े ना, तो आप इस तरह लिख सकते हैं जैसे 0.379, बस आपने रिपीट नहीं करना, एंड सो ऑन, नो रेपिटेशन, 432, समझ आ रही? कोई भी ऐसा नंबर जिसमें रेपिटेशन ना हो, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन रैकरिंग डेसिमल, ठीक है। और पाई इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन रैकरिंग डेसिमल, ठीक है। सो इज दिस क्लियर नाउ? इज दिस मेकिंग सेंस? ठीक है। Yes, All ma'am. right. So now let's get back to the question. So now keeping in the same. So 11 is a real number. What do you think? It is true. 11 is a real number system में ही आ रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल्स में लिख सकती हूँ, लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है, पाई, ठीक है। नॉन Zero is रैकलिंग a एक natural नंबर लिखना है number. तो No. लेट्स से 0 3.143296 एंड 3 डॉट्स, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स। अब देखिए नेक्स्ट इज जीरो इज अ नेचुरल नंबर। डू यू थिंक जीरो इज अ नेचुरल नंबर? False. 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 Zero is not a natural number. ठीक है। It's a whole number. 9 is, that's right, it's a whole number. 9 is an integer. Do you think 9 is integer? Yes. True. Yes, it is true. ठीक है, 9 is integer. 9 is integer. It is also a whole number. It is also a natural number. Ma'am. लेकिन 9 is not a rational number. Yes. ठीक है. So if a number is natural, then it Ma'am, also it's is a whole. false. It is It's false. false ठीक है, because it's false. in whole there's zero. That's right. अच्छा, now question number 8 में I want you both to answer this question. Name a number that is integer but not whole. Any number which is integer but not whole number. That is integer but not whole. तो integers में क्या extra चीज add होती है? Ma'am, negative numbers. Negative number. So any negative number can be the answer. So Abrish, can you give me -2. one answer? -2. -2. Mohit, can you give me any other answer? Any integer which is not whole. -4. -4. ठीक है, so any negative number you can write down. You cannot write 0. You cannot write any positive number. ठीक है, but any negative number is acceptable. ठीक है. So now the 9th question. Give an example of irrational number that was not already used in the worksheet or notes. कोई और irrational number जो यहाँ पर नहीं यूज हुआ कहीं पे भी. ठीक है. So अगर हम ऊपर थोड़ा जाएं तो let's say ये तो सारे रैशनल हैं. ठीक है, इनमें से कोई भी irrational नहीं था. यहाँ पर कुछ irrational number थे. ठीक है. So can you tell me any irrational number? Any. Let's skip this condition. Any irrational number. Pi. Any Ma'am, 0.3679. 0.3679. 0.3678. All right. All right. So ये दोनों हमने non rectangle 0.24. decimal. All right. That's also fine. 0.24 जो भी आगे 12936 and 3 dots. So can you tell me example from roots? Any square root Ma'am, which 2. is irrational. Square root of 2. 1. मोहित कोई आप square root of 1 नहीं हो सकता. 3. मोहित आप एक बता. Square root of 3 is right. मोहित आप एक square root बता दें. Square root of 5. ठीक है. So can you tell me any cube root? Any cube root which is irrational. 7. Very good. First 1000 में 990 ऐसे हैं जो अनसॉल्वेबल हैं. और कोई अब्रिश आप बता दें एक क्यूब रूट which is irrational. क्यूब नंबर ना हो बस. कोई और अब्रिश? Ma'am, Can you 11. tell? 11. ठीक है. So this is also irrational. ठीक है. अच्छा, now the last question. They are saying use the real number system flow chart. दो चीजें हैं. Now this is Venn diagram, ये जो circles वाली है, and this is the flow chart. ठीक है. So use the real number system flow chart to classify the following numbers. So let's draw the flow chart. So real number system is divided into two parts. Real number Ma'am, system. you can open the whiteboard. We can see Do you from want there. me to? Is it difficult You to see can. from here? Because No, ma'am. there is enough space, Abrish. Do you want me to do it on the whiteboard? Because it's easy to do it It's here. okay. Is it not clear? Can I do it here? It's okay. Yes. All right, because the numbers are here now. Achha, real number is divided into two groups. One is rational. This is a flow chart when you use आपने computers में That पढ़ा is होगा flow chart. irrational. That's right. Flow chart में हम क्या करते हैं? We use arrows. यहाँ पर arrows डाल देते हैं. ठीक है, आपने computers में पढ़ा होगा flow chart. ठीक है, तो यहाँ पर irrational लिख देते हैं. ये flow chart में we use rectangles, है ना? अच्छा, now irrational में तो further we don't have any group, but rational is further divided into integers, right? So there are integers. Then in whole numbers. Then whole numbers का box है. Whole And then numbers. last natural numbers. Natural numbers. Very good. So they will all be connected using. अगर Venn diagram के through कहते हैं ना, तो फिर हम Venn diagram में क्या बनाते हैं? Circles बनाते हैं. ठीक है, just like we did above. अच्छा, now I am changing the color so that you can see it clearly. अच्छा, first number is 0. अब हमने सबसे छोटा group देखना है. So 0 will go in which group? In which Ma'am, whole box? number.
whole Whole numbers number. mein zero will come here. Is it clear, Mohit? Yes. All right. So 0 will come in the whole number. Now the next one is -5. Where it will go? Integer. Integer. Very good. So -5 will come in integers. Okay. Then it is 1.5. Which group? Ma'am, rational. Rational number. ठीक है 1.5. Terminating decimal है ना इसलिए rational है. Then next is 4. Mohit, 4 will Ma'am, go in which group? ma'am, in natural numbers. In natural numbers, 4 is coming here, right? So now next one is -3.7. -3.7. अब देखिए it's a decimal but it's a terminating decimal. So where it will go? Ma'am, Minus rational. 3. Rational number है. -3.7. ठीक है. Next is 11/4. अब 11/4 is written in fraction form. So हम इसको decimal में convert करेंगे to see what is 11/4 in decimal form. If you divide 11 with 4, so 4 2s are 8, 3, then it will become 30. 4 Ma'am, answer is 7 2.75. 2.75. So it means it is 2.75 is which type of decimal? It's a terminating decimal, right? It's The rational. division is finished, so it is rational. 11/4 will come in this box. ठीक है. अच्छा, next is square root of 3. Where it will go? Square root of 3. Irrational. Irrational. Square root of 3. Okay, ये solvable root नहीं है. Last is square root of 36. Square root of 36. Ma'am, rational. Rational. लेकिन ये किस ग्रुप में जाएगा? आप मुझे ये बता दें. Square root of 36 का आंसर है Ma'am, in the rational box. all right. In the rational or in the whole in the natural number. Square root of 36. ये natural number है ना? Yes. ठीक है. ठीक है, ये रैशनल है, लेकिन ये कौन सा रैशनल नंबर है? ये नेचुरल नंबर, बिकॉज द आंसर इज 6. ठीक है बेटे, इज इट मेकिंग सेंस? इज इट क्लियर मोहित? Yes. ऑलराइट, दैट्स ग्रेट. सो आई विल शेयर अ पिक्चर. हमने ये याद किया. सो नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रैक्टिस नाउ जो रह गए थे हमारे पास. अगर मैं आपको एक दफा करिकुलम में दिखाऊं तो विच प्रैक्टिस नाउ क्वेश्चंस वी नीड टू डू? लेट मी सी. वी नीड टू डू प्रैक्टिस नाउ 5, 6 एंड 7. ठीक है. सो दिस इज योर बुक. प्रैक्टिस नाउ 5, 6 एंड 7. प्रैक्टिस नाउ 5. ये प्रैक्टिस नाउ 5 है. ठीक है. So first question is find square root of 784 using prime factorization. Second question है given that the prime factorization is this, so find the answer without calculator. ठीक है, जैसे हमने कल किए दो question. Use prime factors to explain why 6 into 24 is a perfect square. So we will solve all these questions together. First question is 784 prime factorization. So you need to tell me the answers also, although आपने homework के Ma'am, question can किए. you tell the practice now questions? Which जी one? बेटा, ये तीनों हम करेंगे. Practice now 5. If you have book, it is page 9. Practice now 5. ठीक है. If you want me to send the picture, I can do that also. ठीक है, Oh, I I can have send the book. picture. All right. It's page number 9, Abrish. Practice now 5. First question is find square root of 784. ठीक है, using prime factorization. So first question से शुरू करते हैं. 784, I believe. 784. So इसका first question is prime factorization of 784. So let's do the prime factorization. Let's see ये किसके बराबर है. First of all, we can divide with which number? 784. Ma'am, Mohit, 2. beta, you with 2. Mohit, what is half of 784? Ma'am, half of 784 is 300, 309. 92. ठीक है. So we will still divide it with 2. So now what will be the answer? What is half of 392? देखिए आपने कैसे divide करना है. 2 ones are 2, 1 is the remainder, so I can write it down here in small letter. 19. 2 9s are 18, then 1 remainder again. So 12 है तो 2 6 are 12. 196. ठीक है. 196. We can still divide it with 2. So 2 9s are 18, 1 remainder है, इसको छोटा सा यहाँ लिख लें. 16, And 2 8s are 16. ठीक है. You can still divide it with 2. 2 4s are 8, 1 remainder है तो 2 9s are 18. Ma'am, 40. So now we need to divide with 49 is divisible by Ma'am, 7. 7. So 7 sevens are 49 and 7 ones are 7. Because it is a square root, so we need to make groups of 2. ठीक है. So हम कैसे लिखेंगे इसको? मोहित, ये आपने उस दिन नहीं किया हुआ था बेटे. ये आपने even if you are writing 2 square या इस तरह आप लिख रहे थे ना 2 cross 2, that's also fine. लेकिन आपने ऊपर square root लाजमी डालना है, क्योंकि फिर तभी आप इसका कैंसिल कर सकते हैं ना square root के साथ. I am writing in groups. Index notation जिसे कहते हैं, आपने 6 में पढ़ा होगा. This is Ma'am, the answer is index 28. notation. I have taken the square root. Answer is Very good. 28. Very good. So this is the ये step लाजमी करना है. These powers will be cancelled with the root.
So the answer would be 2 into 2 into 7, and as the Abrish is saying, the answer is 28. ठीक है? So 784 is a square root of 784 is 28. ठीक है? Now let's do the second question. अब देखो second question is, okay, we need to find out 7056 is equal to, this is given to you, 7056. Prime factorization उन्होंने करके आपको बताई हुई है. This is equal to 2 raised to power 4, 3 square and 7 square. 2 raised to power 4, 3 square and 7 square. So you need to find out the square root of 7056. तो इस तरफ भी square root लेना होगा. Square root of, अब देखिए, this is 2 की power 4. I told you if it is a square root, so you need to write in groups of 2. So इसको हम लिख सकते हैं 2 का square multiply by 2 का square. Multiply by 3 square is fine. 84. Very good. So very right. अब देखिए ये step आपने लाजमी करना है, because then you can cancel this square root with the squares. So इसका आंसर आपके पास आता है. आप देखिए square और square root cancel हो गए because they are reverse operations. ठीक है, तो this is your answer. Answer is 92. 94. So 94 का अगर square लें तो that is 7056. Ma'am, Let's answer do is question 84, not 94. 84. ma'am. Oh, 84. Sorry. ठीक है. So now let's do the third part. अब third part is, let's say, third part is use prime factorization, prime factors to explain why 6 into 24. तो उन्होंने कहा है why 6 multiplied by 24 is a square number. तो क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करें अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ जाता है. यू नीड टू प्रूव के वाई 6 into 24 इज अ स्क्वायर नंबर. तो कैसे स्क्वायर नंबर प्रूव होता है? हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे. इसके प्राइम फैक्टर्स अगर हम देखें तो इट इज 2 into 3, है ना. अगर आप 24 के प्राइम फैक्टर्स डायरेक्टली नहीं लिख सकते तो यू कैन जस्ट फैक्टराइज इट. 24 को फैक्टराइज कर लें. 2 12 2 6 के 2 3 and 3 into 1. So prime factors of 6 are these. Prime factors of 24 are 2 into 2 into 2 into 3. So why it is a square number? Can you explain now after doing the prime factorization? So how you will explain it's a square number? Abrish और मोहित, इन prime factors को ध्यान में रखते हुए कैसे आप explain करेंगे it's a square number? स्क्वायर नंबर क्या होता है अगर प्राइम फैक्टर्स को गौर से देखें? देखो, स्क्वायर नंबर वो नंबर होता है जिसमें सारे नंबर्स ग्रुप्स बन जाएं. अगर आप देखो, इस 2 का ये ऑलरेडी ग्रुप है एक. ये जो 2 और 3 है ये ग्रुप नहीं थे, बट द 6 के फैक्टर्स आर मेकिंग देम पेयर्स आल्सो. ये 2 इसके साथ पेयर अप हो रहा है और ये 3 इसके साथ पेयर अप हो रहा है. सो यू विल से आफ्टर राइटिंग द प्राइम फैक्टर्स यू विल से बिकॉज the prime factors are in group of 2, so that's why this number 6 cross 24 is a square number. स्क्वायर नंबर वो नंबर होता है जिसके सारे फैक्टर्स जो हैं प्राइम फैक्टर्स वो ग्रुप्स में हो, ग्रुप्स ऑफ 2 में, बिकॉज इट इज अ स्क्वायर नंबर. ये चीज समझ आई है बेटे? Yes. मोहित आपको? Yes, ma'am. ऑलराइट, सो लेट्स डू नेक्स्ट प्रैक्टिस नाउ 6. जल्दी से प्रैक्टिस नाउ 6 पे जाते हैं बिकॉज कल हमने ये चीजें होमवर्क में कर ली थी ज्यादा. प्रैक्टिस नाउ 3 में वी हैव क्यूब रूट्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट, लाइक फाइंड क्यूब रूट ऑफ 2744. ठीक है, we are going to do practice now 6. So question number 1 is, हमने क्या find out करना है? क्यूब रूट ऑफ 2744. 744. ठीक है, प्राइम फैक्टर्स की जितनी प्राइम फैक्टराइजेशन की जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना इट विल बी हेल्पफुल. और इसके लिए आपको प्राइम नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स याद होने चाहिए. सो विद व्हिच नंबर आई कैन डिवाइड? विद 2. व्हाट इज हाफ ऑफ 2744? 1 2 3s are 6, 14 2 7s Ma'am, are 14, 1372. 72. Very good. You can again divide with 2. ठीक है, what is half of 1372? 2 6 are 12, 1 carry, 1 remainder. 2 8s are 16, 1 remainder. So 2 6 are 12. ठीक है, इस तरह यूज करना है डिवीजन जितनी आसान हो सके. We can still divide with 2. ठीक है, until this is an even number, so we will keep dividing with 2 because 2 is the only prime factor, prime number. ठीक है, so 343. Now I cannot divide with 2. अब किससे डिवाइड करूं? 343 को याद, आपको कोई क्यूब नंबर याद आ रहा है जो किस नंबर का क्यूब है? 343 7. हमने लिस्ट में भी लिखा 7 का क्यूब है. वेरी गुड. सो आपने अब 3 दफा 7 से डिवाइड करना है. 7 से पहली दफा डिवाइड होगा तो 7 4s are 28, 6 कैरी होता है 7, 9s are 63. ठीक है, देन 7 7s are 49 and 7 1s are 7. ठीक है, सो फर्स्ट 10 क्यूब नंबर्स याद रखना आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन? क्यूब है तो आपने 3 3 के ग्रुप्स बनाने हैं. मेक अ ग्रुप ऑफ 3, मेक अ ग्रुप ऑफ 3. सो दिस इज 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7 क्यूब. ये लाजमी लिखना है इंडेक्स फॉर्म में. ठीक है, so cube root and cubes are cancelled because they are inverse operation, so you are left with 2 into 7, which is 14. So 2744 या 2744 is a cube of 14. 14 cube is basically this number. So any question?
Is it clear? No. All right. Mohit, आपको भी समझ आ रही है? All right, very good. So now let's look at the second question. Second question is the prime factorization of 9261. 9261 की prime factorization आपको बताई हुई है. It is 3 cube into 7 cube. 3 cube into 3 cube into 7 cube. They are asking you to find cube root of 9261. Ma'am, answer is So ये तो 21. 21, very easy, you know. इसका solution आप कैसे करेंगे? एक बार 3 cube और 7 cube अंदर लिखेंगे. Prime factorization पहले ही हुई है. This cube is cancelled with the cube root. So the answer is 3 into 7, which is 21. ठीक है? Why we are doing all these practice now today? Because I want you to know the exact solutions. इनको अगर ये पेपर में आपके पास questions आते हैं, तो what should be the solution of these questions? ठीक है? अब देखिए last question. K is ये वैसे ही question है जैसे हमने कल किए थे. ठीक है? आपको याद है कल हमने ऐसे दो question किए थे exercise के. K is a non-zero whole number. Given that 15 into 135 into k is a perfect cube, write down the smallest value of k. तो ये मैंने आपको कल भी बताया था. तो किसी को याद है आप में से कि ये कैसे सॉल्व करेंगे? उन्होंने हमें ये बता दिया है कि ये परफेक्ट क्यूब है, ये परफेक्ट क्यूब है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन को, ये कल भी हमने दो क्वेश्चन किए थे, इनको कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ कैन वी फाइंड व्हाट इज k? व्हाट वी आर गोइंग टू डू? हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन? हमें ये पता है कि ये तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इज अ क्यूब नंबर. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 एंड 135 एंड देन वी विल, बिकॉज इट्स अ क्यूब नंबर, सो हम इसके तीन तीन के ग्रुप्स बनाएंगे और जो भी मिसिंग वैल्यू रह जाएगी ना वो k की वैल्यू बन जाएगी. इज द मेथड क्लियर? ये इस तरह के दो क्वेश्चन हमने कल भी किए थे. ठीक है, we will do prime factorization of 15 and 135 and then we will write it down और उसके हम तीन तीन के ग्रुप्स बनाएंगे. whatever will be the missing like factor वो k में चला जाएगा. so that will be the smallest value of k. so 15 into 135. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का a पार्ट. 15 into 135 into ये आपको गिवन है कि इट्स अ क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर. ठीक है, सो 15 की प्राइम फैक्टर्स तो बहुत ही आसान है, 3 into 5. ठीक है, 135 के प्राइम फैक्टर्स you can find out by using the prime factorization. With which number I can divide 135? 3. With 3. ठीक है, 3 6 are 12. Oh sorry, oh 4 3 से 4 से, so 4 3s are 12 and 4 5s are 15. Then again with 3, so it is 3 1s are 3 and 3 5s are 15, right? So now I cannot divide with 3, so I can divide with, oh I can still divide with 3. So 3 5s are 15 and 5 1s are 5. Yes. ठीक है, आप देखिए इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 3, ये तो पहले ही like 3 into 3 into 3 into 5 into k. अब देखिए because it is a cube root, so as it's a perfect cube, ठीक है, it's a perfect cube, so group of 3 will be made. ठीक है, ये आपके लिए मैं लिख रही हूँ बिकॉज यू नीड टू नो, यू नीड टू रिमेंबर. ठीक है, बिकॉज अगर यहाँ पे स्क्वायर नंबर होता है तो फिर हम दो दो के ग्रुप बनाते. अब देखिए मेरे पास 3 की पावर 4 है, लाइक 3 की 3 पावर है, देखिए 3 की 3 पावर है और एक 3 की 1 पावर है. सिमिलरली आई हैव पावर ऑफ 5 2 पावर ऑफ 5 इनटू k. अब मुझे ये बताएं, दिस इज फाइन, इज इट फाइन? द फर्स्ट वन 3 क्यूब, Yes, ma'am. बिकॉज इट्स अ क्यूब नंबर है ना. सो व्हाट इज मिसिंग हियर? यहाँ से क्या मिसिंग है? 2. 3 की पावर 2 मिसिंग है. व्हाट इज मिसिंग फ्रॉम दिस 5? Ma'am, 1. 5 की 1 पावर मिसिंग है. ये मोहित बात समझ आ रही है? 3 की 1 पावर है, ठीक है, सो वी नीड 2 more 3s. ठीक है, ताकि ये क्यूब नंबर बन जाए. 5 की 2 पावर्स वी ऑलरेडी हैव, सो वी नीड 5 की 1 पावर. सो इसका मतलब है k is equal to, so k is equal to 3 square into 5. और ये क्या आता है k की वैल्यू? 3 square is 9, 5 9s are 45. So what is the value of k? What is the value of k? The minimum value is 45. अच्छा, I have a question now. 45. अच्छा, I have a question now कि why it is already इस तरह के सब question में why it is written in the question कि find the minimum value, smallest value. Can you see there is written smallest value? So can we have any other value of k by looking at this question? Do you think this is the smallest value? उससे ये perfect cube बनेगा. Do you think we can have the other values of k? Or if yes, then what can be those? कैसे हम और values निकाल सकते हैं k की कि ये cube number ही रहे? So Abrishan, मोहित, आपको क्वेश्चन मेरा समझ आ रहा है या नहीं? Yes, ma'am. I'm No, asking ma'am. you. No, ma'am. No, I No, can't ma'am. No, ना. understand. अच्छा, in the question, इस तरह के सब क्वेश्चन में they are saying find the smallest value of k, है ना?
स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के। कल भी हमने 2 क्वेश्चन किए थे, उन्होंने कहा था स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करें। सो व्हाई दे आर सेइंग द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के, इसका मतलब है देयर कैन बी अदर वैल्यूज ऑफ के आल्सो। सो व्हाट कैन बी दोज अदर वैल्यूज? सबसे छोटी वैल्यू तो आई नो 45 है, और क्या वैल्यूज हो सकती हैं के की 45 से बड़ी? इसका ये मतलब है, देखिए अगर आप k को 45 डालें ना तो दिस विल बिकम अ क्यूब नंबर, लेकिन यू कैन डू अदर थिंग्स आल्सो। देखो आप k को ये भी लिख सकते हो, 45 तो आ गया, टू बैलेंस दिस आउट आप इसको 2 क्यूब से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इट विल स्टिल बी अ क्यूब नंबर बिकॉज यू हैव मल्टीप्लाइड इट विद 2 क्यूब, ठीक है? तो दिस इज स्टिल अ क्यूब नंबर। सो आई कैन आल्सो डू, ये अनलिमिटेड वैल्यूज हैं k की, हमने सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखी है। 45 के साथ हम 3 क्यूब को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? 45 के साथ हम 5 क्यूब को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इट इज स्टिल अ क्यूब नंबर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बिकॉज द प्रॉब्लम इज नॉट like this is the minimum value जो इसको क्यूब नंबर बना देगी, but the maximum value has no limit because the maths are having unlimited numbers। आप दो दफा 2 क्यूब you can multiply 2 times, it is still a cube number। ये बड़ा होता जा रहा है, sorry 45 multiplied by that 3 cube, I am 1215। but that is multiplied with this number also, but you got the concept ना कि क्यूब नंबर बनाने के लिए द मिनिमम नंबर इज 45। 45 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना 15 और 135 से, दैट विल बिकम द स्मॉलेस्ट क्यूब नंबर इस सिचुएशन का। उससे बड़ा क्यूब नंबर तो कोई भी हो सकता है, हम उसको किसी भी लाइक 45 मैंडेटरी है ना, 45 को रहने दें, उसके साथ आप 2 क्यूब मल्टीप्लाई करें, 7 क्यूब मल्टीप्लाई करें, 19 क्यूब मल्टीप्लाई करें, कोई भी प्राइम नंबर का क्यूब मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो दैट द नंबर इज गेटिंग बिगर एंड बिगर बट इट इज स्टिल अ क्यूब नंबर। इज दिस क्लियर अब्रिश या Yes, नहीं? ma'am. ठीक है, सो दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग दिस वर्ड इन द क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के, बिकॉज ये सबसे छोटी वैल्यू है के की, व्हिच इज मेकिंग दिस प्रोडक्ट आ क्यूब नंबर, राइट? ठीक है बेटे? Yes. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स डू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, अच्छा, अब द क्वेश्चन इज if p and q both are prime numbers, find the values of p and q such that 15 into 135 multiplied by p by q is a perfect cube। ठीक है, p and q both are प्राइम नंबर्स, ठीक है? सो 15 इंटू 130, अब वही असल में वही चीज है, इसका सेकंड पार्ट है। तो 15 को हमने 15 क्रॉस 135 उसी की वेरिएशन है, पहले यहाँ पे k था, अब यहाँ पे p बाय q है, ठीक है? सो उसी तरह सॉल्व करेंगे। 15 के प्राइम फैक्टर्स थे 3 इंटू 5 और 135 के प्राइम फैक्टर्स थे 3 क्यूब इंटू 5, ठीक है, इंटू p बाय q, बिकॉज दे आर स्टिल सेइंग क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब ही है ना, सो क्यूब दे आर आस्किंग, सो यू कैन से दिस इज फाइन, तो ये भी फाइन है, तो इस दफा The second part of that you solved it, you have solved it, practice now. Practice now. all right, do you want to do that before this practice now? Right, Ma'am, so this the is जी बेटे, so what do you think, कैसे solve करें? ma'am, to make the power of 3, multiple of 3, we will divide with by 3 q, resulting in 3 by power 3. And to make the power of 5, multiple of 3, we will multiply with multiply by 5, result will be 5 cube. So what will be like, what will be written in the place of fraction? यहाँ पे क्या लिखें? Ma'am, अगर the देखो, p is 5 and q is 3. अगर मैं 5 और 3 लिखूं तो फिर ये परफेक्ट क्यूब नहीं ना बनता। ओ माय, ओ अच्छा, दैट्स राइट, दे आर कैंसलिंग दिस 3, ओ यू आर राइट, लाइक ये ऐसा है ना, 3 की पावर, मोहित आप भी देखे ना, देखिए अब्रिश ने इसको सॉल्व किया है, 3 क्यूब, that's right, ये तो मुझे ख्याल ही नहीं आया कि we can cancel it also, so they are adding 5 by 3 here, why? Because this 5 will make this cube और ये 3 इसको cancel out कर देगा, तो this will still be a cube number। very good अब्रिश। मोहित ये चीज समझ आई? अच्छा, मैं इसको I didn't thought of canceling it, I thought of making it a cube number by adding something, लेकिन उसमें क्या हो रहा था कि वो प्राइम नंबर्स नहीं आ रहे थे ना, because the numbers were getting bigger, ठीक है? So मोहित, are you getting this, why p by q is 5 by 3? Yes। ठीक है, सो अच्छा, दिस इज द ओनली आंसर आई बिलीव, इसके अलावा कोई आंसर हो ही नहीं सकता, बिकॉज अगर आप लेट्स से अगर आप सोचें ना कि आप 3 को 3 स्क्वायर बनाएं तो दैट विल बी नॉट बी अ प्राइम नंबर, बिकॉज जब भी आप किसी भी प्राइम नंबर की 1 पावर तो प्राइम ही है, लेकिन अगर आप उसकी 2 पावर लें तो एक्चुअली वो प्राइम नंबर नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई वाज स्टक इन दैट, ठीक है? सो आपने प्राइम नंबर्स की 1 पावर यूज करनी है, एंड फॉर दैट द ओनली आंसर इज 5 by 3, so this is p by q। very good, thank you Abresh, Welcome, ma'am. well done। So this is the only answer, इसका कोई और आंसर हो ही नहीं सकता, like this is the only answer of this question, ठीक है? इसके अलावा कोई भी वैल्यू लें, जस्ट लाइक आई वाज टेकिंग, तो वो पावर बन जाती है ना, और वो फिर प्राइम नंबर नहीं रहता,
ठीक है. So the only answer to this question is this trick that we can cancel out the one power ताकि वो खत्म ही हो जाए, उसका मसला ही हल हो जाए. और 5 is also, both are prime numbers as well. Very good. So excellent. So there was another हमने जो किया था, because हमने next practice now करनी है. So there was a learning objective, estimate. मैंने आपको कहा था कि we will learn this also, कि how can we estimate square roots and cube roots. So for example, they are giving you this example कि without calculator estimate the value of 50 square root of 50. अच्छा, जब हमने estimation करनी होती है ना, अभी ये क्वेश्चन में हमने की भी थी, तो हम देखते हैं वो क्लोजेस्ट किस स्क्वायर नंबर से है. जैसे देखिए square root of 50, so because it is close to square root of 49, so the answer estimated value is 7. ठीक है. अब square root of 63, it is close, cube root of 63, close to 64, so the answer would be 4. ठीक है. अच्छा, अब मुझे ये बताएं, square root of 123, how can we estimate it? ये किस square root के करीब है, किस स्क्वायर नंबर के करीब है? Square root of 123, which square number is closest to 123? Abrish and Moeed. Yes, ma'am. So 11. 123, 11, तो नंबर क्या है? 121 के क्लोजेस्ट है. So we will use this symbol. You know this symbol is symbol of estimation. ठीक है. So we will use this symbol. 123 का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे? We do it often. आप अगली क्लासेस में जब जाते हैं, बिकॉज यू डोंट हैव कैलकुलेटर्स, तो आप बहुत जगह पे राउंडिंग ऑफ या एस्टिमेशन यूज करते हैं, स्पेशली रूट्स में. अभी आप वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पढ़ेंगे ना, जब अभी 7th में भी 8th में भी, तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में बहुत सी जगह पे हम रूट्स लेते हैं जब, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालते, हम उसको एस्टिमेट करते हैं. ठीक है. बिकॉज वी डोंट हैव कैलकुलेटर, वी कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट डेसिमल आंसर. ठीक है. सो वी विल से दिस इज 11. ठीक है. स्क्वायर रूट ऑफ 123 इज 11 point something, we consider it 11. Now this is interesting. This is cube root of 123. तो क्यूब रूट्स में व्हाट इज द क्लोजेस्ट नंबर? कौन सा क्यूब नंबर है जो 123 के 2 क्यूब इज 8? मोहित अनम्यूट करके बेटे मुझे आंसर करें. व्हाट इज 3 क्यूब? 27. व्हाट इज 4 क्यूब? 27, व्हाट इज 4 क्यूब? 84, है 84 तो क्यूब नंबर ही नहीं है. 64, 64, 64. व्हाट इज 5 क्यूब? 125. 125. 125. So 125 is the closest. ठीक है. So we Yes. will use approximation sign and we will say 123 can be approximated as 125 because that is the closest value. So इसका मतलब है this is approximately, estimated value is 5. Square root of 123 is almost 5. Although इसका आंसर exactly 4.9 something होगा, but हम estimation use करें. ठीक है.